द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट कंपेशनेट, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ है। My dear students and worthy viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are doing well, and by the grace of Allah the Almighty, I am also quite well. May Allah's special blessings be upon you all in the month of Ramadan, and may you always remain safe and sound. After these beautiful du'as, now I'm going to start my lecture, but you are fully aware of me that I always start my lecture with a beautiful poetry. And you know that these days I have been reading out the poetry of great poet of Tin who says, भेनर हिन भंभोर में घायल थी घारियां, भेनर हिन भंभोर में घायल थी घारियां, सजण जे सांग विया सेई थी सारियां, सजण जे सांग विया सेई थी सारियां, से कीअं विसारियां जे वटां मूं वाट थिया, से कीअं विसारियां जे वटां मूं वाट थिया. So these were the marvelous lines said by great poet of Tin Chadri, who is commonly called Sono Latif, La Latif, Bhitjo Latif. After his beautiful poetry, now I want to tell you about today's lecture. You know that Alhamdulillah, by the grace of Allah the Almighty, we have covered noun phrase. You know that in my 6 lectures, I have taught you about noun phrase, and once again in today's lecture, I'm going to teach you about noun phrase, and it would be taught to you as object but in the form of gerund. What? It would be taught to you as object but in the form of gerund. Fine, beta? Before that, I taught you noun phrase, but that was in the form of infinitive. And in today's lecture, noun phrase is going to be taught in the form of gerund. Fine, beta? So without wasting time, we come to our today's lecture. So let's start today's topic. Example number 1. He prefers traveling at night. I repeat, he prefers traveling at night. I repeat, he prefers traveling at night. बेटा इस जुमले का मतलब ये होगा कि वो रात में सफर करने को तरजीह देता है, वो रात में सफर करने को तरजीह देता है. Yeah, there are a few people who dislike traveling in the day. They rather prefer traveling at night. What? They rather prefer traveling at night. मतलब वो दिन में सफर करने को जो ना तरजीह नहीं देते, उसके बरक्स क्या करते हैं, वो रात में सफर करने को तरजीह देते हैं. ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं, वो रात में सफर करने को तरजीह देते हैं. ठीक. सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 1 where noun phrase was taught to you as object but in the form of gerund. I will tell you what is gerund at the end of today's lecture, inshallah, but first let me complete today's examples. So after example number 1, we come to example number 2. They enjoy playing Scrabble on Sundays. I repeat, they enjoy playing Scrabble on Sundays. बेटा इस जुमले का मतलब ये होगा कि वो हर इतवार के दिन स्क्रेबल खेलने का लुत्फ उठाते हैं. वो हर इतवार के दिन स्क्रेबल खेलने से लुत्फ अंदोज होते हैं या उनका स्क्रेबल खेलने का लुत्फ उठाते हैं. ठीक है, स्क्रेबल खेलकर लुत्फ अंदोज होते हैं या स्क्रेबल खेलकर उसका मजा लेते हैं. ठीक है, लुत्फ अंदोज होना या मजा लेना डिपेंड्स ऑन अस. In whatever way we want to take its Urdu depends on us. ठीक है. So that was example number 2 related to today's topic, and that is noun phrase as object but in the form of gerund, gerund, gerund. After example number 2, we come to example number 3. Do you enjoy performing prayer in the month of Ramadan? I repeat, do you enjoy performing prayer in the month of Ramadan? बेटा इस जुमले का मतलब ये होगा कि क्या आपको रमज़ान के महीने में इबादत करते हुए मज़ा आता है? क्या आपको रमज़ान के महीने में इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए मज़ा आता है? आप देख लें, यकीनन. अच्छा बेटा, अब मज़े आने से मुराद ये नहीं है कि मतलब जिस तरह हम कोई गेम खेल रहे होते हैं
या कोई फिल्म देख रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं या कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, तो उसमें हमें मज़ा आता है उस फिल्म को देखकर, उसके यानी गाने सुनकर या उसके कोई डायलॉग सुनकर, ठीक है, इस तरह का नहीं। यहाँ पर जो मैंने इंजॉय की मीनिंग लिए, सेंस लिया, वो है कि मतलब सुकून मिलना। मीनिंग के व्हेन वी से प्रेयर, व्हेन वी ऑफर प्रेयर, व्हेन वी परफॉर्म प्रेयर इन कॉमन डेज, आई मीन leaving this month, okay, leaving this month, when we say prayer in the month of, supposing in the month of Rajab, or in the month of Muharram, or in the month of Rabiul Awwal, Rabiul Sani, शौबान, सो ठीक, मतलब उन महीनों को छोड़कर उनमें जो हम इबादत करते हैं, मज़ा आता है उन दिनों में भी, उन महीनों में भी मज़ा आता है। वी इंजॉय performing prayer in those months as well, but this is a special month, ठीक, which month of Ramadan, this is special month, auspicious month, ठीक, compared to those months. So the sentence is, do you enjoy performing prayer in the month of Ramadan? What do you enjoy performing prayer in the month of Ramadan? क्या आपको रमज़ान के महीने में इबादत करते हुए मज़ा आता है? इबादत करने में मज़ा आता है? क्या आपको रमज़ान के महीने में इबादत करने में मज़ा आता है? ठीक है बेटा, फाइन। So that was example number 3 related to today's topic, and that is none other but noun phrase. And today noun phrase is being used as object in the form of gerund. Fine beta, what? In the form of gerund. Noun phrase is being used as object but in the form of gerund, right? So that was example number 3. After example number 3 we come to example number 4. She will give up taking pills of cholesterol after a week. I repeat, she will give up taking pills of cholesterol after a week. बेटा इस जुमले का मतलब ये होगा कि वो एक हफ्ते के बाद कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाना बंद कर देगी। बेटा इस जुमले का मतलब ये होगा कि वो एक हफ्ते के बाद कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाना बंद कर देगी या रोक देगी। वो एक हफ्ते के बाद कोलेस्ट्रॉल की गोलियां रोक देंगी या बंद कर देंगी। ठीक है बेटा, ओके फाइन, इज दैट क्लियर? या, सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 4. आफ्टर एग्जांपल नंबर 4 वी कम टू एग्जांपल नंबर 5. Why have you stopped working as a clerk in this office? I repeat, why have you stopped working as a clerk in this office? बेटा इस जुमले का मतलब ये होगा कि आपने इस ऑफिस में बतौर क्लर्क काम करना क्यों छोड़ दिया है? आपने इस ऑफिस में बतौर क्लर्क काम करना क्यों छोड़ दिया है? आपने इस ऑफिस में बतौर क्लर्क काम करना क्यों छोड़ दिया है? राइट बेटा, ओके. So that was example number 5 related to noun phrase as object in the form of gerund. After example number 5 we come to example number 6. What? Example number 6. Aslam dislikes wearing tight clothes nowadays. I repeat, Aslam dislikes wearing tight clothes nowadays. असलम आजकल तंग कपड़े पहनना नापसंद करता है। असलम को आजकल तंग कपड़े पहनना नापसंद है। असलम को आजकल तंग कपड़े पहनना नापसंद है। ठीक है बेटा, मतलब कि असलम जो है आजकल, मतलब जब उसकी जवानी थी, ठीक है, जब उसकी जवानी थी तो तंग कपड़े पहनना उसको अच्छा लगता था। नाउ ही हैज गॉन ओल्ड, ठीक, ही हैज बिकम ओल्ड, सो ही डिसलाइक्स वेयरिंग टाइट क्लोथ्स नाउअडेज. व्हाट? असलम डिसलाइक्स वेयरिंग टाइट क्लोथ्स. असलम को आजकल तंग कपड़े पहनना नापसंद है या उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 6. आफ्टर एग्जांपल नंबर 6 वी कम टू एग्जांपल नंबर 7, and that is going to be the last example of today's lecture. Example number 7. We do not avoid eating fast food. I repeat, we do not avoid eating fast food. हम फास्ट फूड को खाने से गुरेज नहीं करते। हम फास्ट फूड को खाने से गुरेज नहीं करते। You know that फास्ट फूड मतलब जो रेडीमेड हमें बाजार में मिलता है, ठीक है,
कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं, मतलब बर्गर्स के, ठीक है, या समोसा या रोल्स एंड सच अदर फास्ट फूड्स. सो वी डू नॉट अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, मतलब वी आर यूज टू ईटिंग फास्ट फूड, ठीक है. सो द सेंटेंस इज वी डू नॉट अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, मतलब हम फास्ट फूड को खाने से गुरेज नहीं करते, या मतलब हम उसको छोड़ते नहीं हैं. वी आर कंटिन्यूसली ईटिंग फास्ट फूड, ठीक है बेटा. सो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर वेयर इन आई टॉट यू नाउन फ्रेज एज ऑब्जेक्ट in the form of gerund with the help of 7 examples. I hope whatever I have taught you today, you have understood it in good way. But if you have got any question, you are allowed to ask me questions in comment section. I'll be there to answer your questions. So that was our today's lecture wherein I taught you noun phrase as object in the form of gerund. As I told you in my brief intro that I'm going to tell you something special in today's lecture, and that is gerund. And I have already told you that gerund is a verbal noun, meaning we make a noun from a verb with the addition of ing to verb. Meaning, supposing if I have got a verb go, I will add ing, that will become going. If we have got the verb write, I will add ing, it will become writing. Another read, if I add ing to it, it will become reading. Another verb play, if I add ing, it will become playing. So going, playing, reading, writing, speaking, eating, listening, praying, offering, getting, these all ing forms, according to today's lecture, they are called noun. And which noun? Verbal noun. Why it is called verbal noun? Because we have made it from verb. We have made it from a verb. So because of this it is called verbal noun. ठीक है बेटा. इसको हम verbal noun क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसको verb में से बनाया है ing form ऐड करके. ठीक है बेटा. हम इसको verbal noun इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसको बनाया है verb और ing लगाकर. ठीक है, वर्ब के साथ हमने ing लगाया तो ये बन गया वर्बल नाउन. इसका दूसरा नाम क्या है? जेरंड. व्हाट? जेरंड. और मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है कि इन्फिनेटिव एंड जेरंड, इनकी जो उर्दू बनती है, ठीक है ना, तो मतलब इनकी जो उर्दू बनती है, एट द एंड ऑफ उर्दू वी विल हैव नून अलिफ ना. व्हाट? नून अलिफ ना, मतलब कि एज वी से टू गो, जाना. सिमिलरली गोइंग, जाना. टू रीड, पढ़ना. रीडिंग, पढ़ना. टू राइट, लिखना. राइटिंग, लिखना. ठीक है बेटा. बिफोर एंडिंग टुडेज लेक्चर, लेट्स एनालाइज टुडेज लेक्चर. ट्रैवलिंग एट नाइट. दिस ट्रैवलिंग, ठीक, दिस इज कॉल्ड जेरंड. We have made it with the help of verb and we have added ing. So this has become gerund. In other words, we call it verbal noun. What? Gerund or verbal noun. Second, playing Scrabble on Sundays. Look this. Play plus ing. This has become playing and this is called verbal noun or gerund. Example number 3. Performing prayer in the month of Ramadan. Perform ing, performing. ठीक. After example number 3, we come to taking pills of cholesterol after a week. This take plus ing, this becomes taking, verbal noun or gerund. Example number 5, working as a clerk in this office. Work plus ing, it has become working and this is gerund or called verbal noun. Example number 6, wear plus ing, it has become wearing. We call it gerund or verbal noun. Example number 7, eating fast food. Eat plus ing, this has become eating and it is gerund or verbal noun. ठीक बेटा. तो आपने देखा कि in today's lecture we used noun as object but in the form of gerund. आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने
नाउन को इस्तेमाल किया था एज ऑब्जेक्ट, लेकिन जेरंड की शक्ल में। जेरंड क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है, लेकिन वो नाउन बनता है वर्ब में से। वर्ब के साथ जब हम लगाते हैं ना आईएनजी, तो ये जो बन जाता है वर्बल नाउन या जेरंड। ठीक है बेटा, इट्स टाइम टू एंड टुडेज लेक्चर, and you know that I often end my lecture with a beautiful dua which used to be said by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, would say, Rabbi zidni ilma, oh my Lord increase my knowledge, oh मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, oh मुझे रब मुझे इल्म में इजाफा कर। But before saying last words, I want to pray for you people that may you always remain safe and sound. May Allah grant you special blessings in this auspicious month. Keep praying for me as well. So that was our today's lecture, wherein I taught you noun phrase as object in the form of gerund with the help of 7 examples. Meeting you soon in next video. Until next video, assalamu alaikum and bye bye.